अब हमारे पास डेल्टा का फॉर्मूला किसके इक्वल आया है, u माइनस 1 इंटू यहाँ पे सभी को क्लियर है, नोट बनाओ। deviation produced by a very thin prism does not depend on angle of incidence, that is it is a constant quantity, for a given prism. It is a constant quantity for a given prism. तो अब बेटा मैं यहां से ना देखो डेल एफ को हटा रहा हूं। डेल एफ को क्यों हटा रहा हूं? अब वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास प्रिज्म जो है वो थिन प्रिज्म के केस के अंदर अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना मर्जी रखें तो डेविएशन एंगल एक कांस्टेंट ही आता है, ठीक है। और वो डेल्टा का फॉर्मूला कितना आता है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, और ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे आई के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। अगर थिक प्रिज्म तो इसके केस में डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, दैट इज आई प्लस ई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। तो इसमें डेल्टा का किसके इक्वल है, दैट इज आई प्लस ई माइनस। तो इसमें ये आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट थिन प्रिज्म के केस में थिन प्रिज्म इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई। यहां से सभी को क्लियर है? डन, राइट। राइट और क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन लिखने से पहले हम थोड़े से फॉर्मूलाज को रिवाइज कर रहे हैं। पहले दो फॉर्मूलाज क्या थे, दैट इज r1 + r2 = a, सेकंड इज i इक्वल टू डेल्टा प्लस देन थर्ड फॉर्मूला इज दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर डेविएशन मिनिमम है, इफ डेविएशन इज मिनिमम तो i किसके इक्वल होगा, e के, और r1 किसके इक्वल होगा, r2 के। यहां तक क्लियर? और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला बना था, दिस फॉर्मूला, दिस इज द थर्ड फॉर्मूला जो आपको रिमेंबर रखना है। और उसके बाद इफ थीटा इज स्मॉल थिन प्रिज्म के केस के अंदर हमारे पास दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला। दीस आर द फोर फॉर्मूलाज, मेन फॉर्मूलाज जो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। विद दिस आवर प्रिज्म इज कंप्लीट, राइट। सभी को समझ में आया अच्छे से? राइट ऑन क्वेश्चन। A ray of light passes through a glass prism such that angle of incidence is equal to angle of emergence. Angle of incidence is equal to angle of emergence. If the angle of emergence is 3/4 times angle of prism, 3/4 times angle of prism, calculate the angle of deviation. Calculate the angle of deviation when angle of prism is 30 degree. Angle of prism is 30 degree.
कर बेटा। ठीक है, विश्वास से कम है। एक हाँ जी बेटा, यहाँ पर आपके पास ए कितना गिवन है? अच्छा, बोला हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है? 3/4 टाइम्स ऑफ ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 30, तो 3/4 into 30, तो ये कितना आ जाएगा? हाँ, ये कैंसिल हो रहा है? 45 आई आ गया। अब आपको पता है आई प्लस ई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, तो आई की वैल्यू भी 45/2 है, ई की वैल्यू भी 45/2 है, डेल्टा की वैल्यू आपको निकालना है और ए का वैल्यू लिखना है 30, so this will become 45 clear. Write down next question. Calculate the refractive index of a material. Calculate the refractive index of the material of equilateral prism. Material of equilateral prism for which angle of minimum deviation is 60 degree. One.
हाँ जी बेटा, देखो अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले कौन से फॉर्मूलाज हैं? एक ये फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला ये है, और फोर्थ फॉर्मूला ये। अच्छा, ये फॉर्मूला हम कहाँ पर कब यूज करते हैं? बीटा वेरी स्मॉल थिन प्रिज्म के लिए। और यहाँ पर प्रिज्म का इक्विलेटरल प्रिज्म गिवन है, तो थीटा कितना गिवन है? 60। तो a का वैल्यू कितना होगा? a is equals to 60 डिग्री। तो अगर a 60 डिग्री तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यस और ओके। a का वैल्यू 60 डिग्री गिवन है, और डेल्टा का वैल्यू कितना गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। तो अब हमने यूज कर, तो दैट इज mu is equals to sin of 60 plus 60 divided by 2 divided by sin of 60 by 2, which is sin of 30. Sin 60 is and sin 30 is answer is 0. Clear?